बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 क्लास का आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। केमिस्ट्री क्लास 10 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। तो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शन इन स्टार्ट ऑफ दिस लेसन। What are forward reactions? Forward reactions are those in which reactants react to form products, and reverse reactions are those in which products react to form reactants. Now we'll discuss about and with an example. For example, we have N2 and 3H2, and there is a reversible reaction between nitrogen and hydrogen. For example, we have 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. For this reaction, we require about 450 degrees Celsius temperature and about 200 atmospheric pressure. This process in which nitrogen and hydrogen react to form ammonia, this process is known as Haber's process. Haber's process. Because a scientist named Haber discovered this process, first used nitrogen and hydrogen to form ammonia in the process of manufacturing of urea. We use this example to explain forward reactions and reverse reactions. Forward reactions are those reactions in which reactants react to form products, and reverse reactions are those in which products react to form reactants. These are called reactants, and these are ammonia is a product in this chemical reaction. Forward reactions are those in which reactants react to form products, and when products react to form reactants again, these type of reactions are known as reverse reaction. And the second difference between forward and reverse reaction is it takes place from left to right. Forward reaction takes place from left to right, and reverse reactions are those which takes place from right to left. Reverse reactions are those which takes place from right to left, and forward reactions from left to right. And the third difference is at initial stage forward reactions are very fast. इब्तदाई तौर पर हमारे पास चूंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और हमारे पास प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं, लिहाजा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने की शरह है वो बहुत ज्यादा होती है. तो थर्ड डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज at initial stage forward reactions are very fast, and at initial stage reverse reactions are very slow or negligible because products are in negligible amounts. क्यों कि अभी तक रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नहीं बने होते कि प्रोडक्ट्स दोबारा फिर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. यही वजह है कि प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बनने की जो शरह है इब्तदाई तौर पर बहुत ही कम होती है. तो थर्ड डिफरेंस इज एट इनिशियल स्टेज forward reaction is very fast, and at initial stage the reverse reaction is negligible, means ना होने के बराबर, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर बन रहे होते हैं इब्तदाई तौर पर. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाती है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जो बनते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो तेज होता जाता है. द फोर्थ पॉइंट इज in forward reaction is it slows down gradually and it speeds up gradually. Reverse reactions are those which speeds up gradually, यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जो बन रहे होते हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, यानी कि हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं, ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस. और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ये हमारे पास हैं रिवर्स रिएक्शंस. रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शंस, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जो बन रहे होते हैं तो इनको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शंस. तो
रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम उस वक्त एस्टैब्लिश होता है जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने की शरह और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने की शरह जो है वो इक्वल हो जाती है। तो इब्तदाई तौर पे हमारे पास जो है फॉरवर्ड रिएक्शंस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते जाते हैं, और रिवर्स रिएक्शंस इब्तदाई तौर पर जो है वो बहुत कम और आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा होते जाते हैं। These are the four differences between forward and reverse reaction. This topic is on page number 6. 10th class chemistry के पेज नंबर 6 पे ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।